Hello, good morning everyone. Welcome back to DSS online classes. This is Rajesh and today I am coming with a very interesting topic that related to the geography chapter 2 and this is the last topic of our chapter 2. Which chapter? You must remember the chapter name Inside the Earth. Before I am going to tell you this topic, it's very small topic. I hope to shortly finish my explanations. My duty is to once again we repeat what we studied in our previous videos. A short video that is when we start the chapter 2, I mean interior of the earth, we already knew that the inside of our earth made up of three concentric layers, that is the crust, mantle and core. Crust is the thinnest layer of all of them. It is 35 km inside our earth from the crust. When we discuss about the hot top layer of our earth and crust, that is from there 35 km. Actually, we divide the top layer into two forms. Number one, continental crust or continental form कह सकते हो, and next is the oceanic forms. So from continental, the depth of the crust is 35 km, but from the oceanic layer, the depth of the crust is only about 5 km. The next one is mantle, where magma is situated. Next one is the interior part of the most inner part of earth, that is the core. So in previous video we discussed all of them in details. There also we discuss rocks and minerals. So minerals, if you remember, I tell you Shima, Sima, and Sial, Sial. Shima and Sial, that is the made up of our crust. Sial and Sima. Sial means Si stands for silicon and Al stands for aluminum. It means the crust made up of two major minerals, silicon and aluminum. And the next one, Shima. Si stands for silicon, but instead of aluminum, the place becomes Na, magnesium. So it is the mantle. And the third layer of our interior of the earth, that is the core. We discussed there minerals Nephrite, and Nife. Ni stands for nickel and Fe stands for ferrum, that is known as the iron. So in this zone, in this layer, nickel and iron. When we discuss about rocks, in those videos, I told you rocks are divided into three major forms, that is the igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. In those videos, we already discussed how igneous rocks form, how sedimentary rocks form, and what the process when sedimentary rocks change into metamorphic rocks or igneous rock change into metamorphic rocks. Igneous rocks known as the primary rocks, because sedimentary rocks are metamorphic rocks made up of igneous rocks. This point must be remembered. The first rock formed
from the magma when volcanic eruption occurred in upper layer of the earth. When this magma cooled down, it changed into igneous rocks. Bas I give example. And when these rocks goes under some process, it may be sediment into sedimentary rocks, change into sedimentary rocks, or metamorphic rocks. Okay, so primary rocks is igneous rocks. आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, which of them is a primary rocks? Options हो सकते हैं igneous rocks, sedimentary rock, metamorphic rocks, none of them. So your answer should be igneous rocks. So in this video, I am going to tell you rock cycle. अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोई बढ़ने की जरूरत नहीं है. रॉक साइकिल क्या है? वाटर साइकिल आप पढ़ चुके हो. साइकिल दैट मींस सर्कुलर, चेंज वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना और फिर कम इनटू द ओरिजिनल फॉर्म और फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए. दैट इज रॉक साइकिल. साइकिल, सो हियर वी डिस्कस रॉक साइकिल. रॉक साइकिल को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझेंगे कि रॉक साइकिल क्या है. डिफिनेशन देख लेते हैं. रॉक साइकिल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस लगातार प्रोसेस है, थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू रॉक्स. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. So rock cycle is a continuous process in which old rocks transformed into new rocks. एक न्यू रॉक्स में वो चेंज होते हैं. दैट इज नोन एज द रॉक साइकिल. सेम है जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा ना. वाटर साइकिल एवोपोरेशंस हैं और सनलाइट आती है तो सी है या वाटर बॉडीज है वहां पे एवोपोरेट होता है, फिर वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड रेन के फॉर्म में आता है. कि जो प्रोसेस है दैट इज साइकिल. तो वाटर साइकिल है. यहां हम क्या देख रहे हैं कि द प्रोसेस है कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच old rocks transform into new rocks known as the rock cycle. How? Let example, if मैंने primary rock को क्या बताया था? Igneous rocks. किससे बनता है? magma से. कब बनता है? तो suppose करो कि जब volcanic eruption हुआ, volcanic eruption जो है magma लावा जो है हमारे अर्थ पे आते हैं, कूल होते हैं. That is ये जो कूल होगा, ये जो रॉक्स बनेगा, ये रॉक्स हमारा कहलाया जाएगा igneous rocks. तो फर्स्ट ऑफ ऑल magma when magma cool down it change into igneous rocks. फर्स्ट रॉक जो है प्राइमरी रॉक्स है. इसी से सारे रॉक्स बने हुए हैं. याद रखना सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनकी ओरिजिन कहाँ है? igneous rocks है. और igneous rocks की ओरिजिन कहाँ है? magma है. ठीक है. magma कहाँ से आता है? तो वोल्केनिक इरप्शन से आता है. क्लियर? सो igneous rocks. अब igneous rocks बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. सपोज करो कि रोल डाउन हो रहे हैं, रॉक्स जो हैं रोल डाउन हो रहे हैं, वार्निंग हो रही है, क्रैक हो रहा है, इट चेंज इनटू सेडिमेंट. सेडिमेंट दैट मींस स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में ये ब्रेक हो जाते हैं. सम एजेंट लाइक विंड और वाटर. अब सपोज करो ये रोल डाउन हुए, माउंटेन्स है, पहाड़ है, ये माउंटेन्स हो गए हमारे. ओके. अब माउंटेन से ये रॉक जो है igneous रॉक्स हमारे रोल डाउन हुए तो क्रैक हुआ दे चेंज इनटू स्मॉल पीसेज. और इन पीसेज को अगर वाटर है या विंड है ले आती हो और एक जगह एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखती जाती है, दैट मींस सेडिमेंट फ्रीज होना शुरू करते हैं. दे चेंज इनटू लेयर टू लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बनता जाता है. एंड सच टाइप ऑफ रॉक्स नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक्स. क्लियर? ये प्रोसेस देख रहे हैं. फिर क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर ह्यूज टेम्परेचर, अंडर ह्यूज प्रेशर प्रोसेस से sedimentary rocks can change into metamorphic rock. For example, slate, sandstone change into marble. Sandstone जो example of sedimentary rocks है, and undergoes pressure or temperature, this sandstone change into. So
टाइप ऑफ रॉक्स, बट इट डजंट मीन कि यही प्रोसेस फॉलो होता है. इट मे बी igneous rocks that will change into metamorphic rocks. और फिर क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकता है कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जो क्रिस्टल हमारी प्लेट्स हैं, जो आप कहते हो ना टेक्टोनिक प्लेट्स है जो आपस में टकराती है, तो हो सकता है ये पुनः जो है इंटीरियर ऑफ द दैट मींस ये फिर मग्मा बन जाते हैं. तो मे बी igneous रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, या हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ही जो है अब अंडरग्रो प्रोसेस और चेंजिंग मग्मा. बट एक चीज बस यहाँ याद रखनी है कि इन सब के फॉर्मेशन की ओरिजिन कहाँ है, igneous रॉक्स में, और कोई रॉक्स किसी भी रॉक्स में चेंज हो सकती है. ओके, सो इसी प्रोसेस को हम यहाँ देखते हैं. द क्रिस्टल रॉक्स, अब क्रिस्टल रॉक्स जो क्रस्ट में पाए जाते हैं तीन तरह के रॉक्स हैं, दैट इज द igneous, sedimentary एंड metamorphic. Once formed may be carried down into mantle, may be carried down, हो सकता है कि वे मेंटल के अंदर पहुंच जाए. कैरी डाउन हाउ, कैसे? थ्रू सबडक्शन प्रोसेस. सबडक्शन प्रोसेस न्यू वन क्या है ये सबडक्शन प्रोसेस? तो देखें कि पार्ट और होल क्रिस्टल प्लेट गोइंग डाउन another plate in zone of plate convergence. क्रिस्टल प्लेट जो है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे हैं, ये अंडरगोस नीचे जा सकते हैं और सबमर्ज हो सकते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं जोन्स ऑफ अदर प्लेट ऑफ जोन्स. इस केस में जो रॉक्स हैं डायरेक्टली गोज इनटू द मेंटल एंड चेंज इनटू मग्मा, और ये क्या चेंज हो जाएंगे, मग्मा हो जाएंगे. तो प्रोसेस दैट इज द रॉक साइकिल. एंड सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, और जब मग्मा में जाएंगे तो एज वी गोज इंटीरियर ऑफ द टेंपरेचर बिकम इंक्रीज. तो जैसे मेंटल जोन में जाएगा इंक्रीज हो जाएगा टेंपरेचर एंड मेल्ट डाउन. ये जो igneous रॉक्स है, मेटामॉर्फिक है या सेडिमेंट्री रॉक्स है, वंस अगेन दे मेल्ट इनटू एंड फॉर्म द magma, and this process repeat again and again, that is known as the rock cycle. Clear? So dear student, this is the last topic of our chapter 2. After that in our next video we discuss civics chapter 2 with the new video. Till then, have a nice day. The question and answer in PDF form I will send in your groups. Till then, have a nice day. And before going to write the question and answer, you must write in your notebook the important notes that we give here on the blackboard. That is more important. I am not saying that all the things you can write, all the things you write, think, and if you find out which is the important, you can write on your notebook, then you start the question and answer. Till then, have a nice day.